The Adventures of Toto, Ruskin Bond. Student, this is your story, and this is the chapter number 2 from your movements book. So before continue this chapter, we will take a overlook of this chapter and we will discuss about the summary of this. स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में बातें करेंगे कि ये चैप्टर क्या है, इसका इंट्रो हम जानेंगे. सो चलिए इसको सबसे पहले इंट्रो से ही शुरू करते हैं. एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि पहले स्टूडेंट्स हम इसको इंग्लिश में समराइज़ करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल समराइज़ दिस लेक्चर इन हिंदी ऑल्सो फॉर द हिंदी स्टूडेंट्स. Now the intro of this chapter, as you know, the name of this chapter is Adventure of Toto and the name of the writer is Ruskin Bond. Is a very famous writer and most celebrated and popular writers of India. You know very well his stories, if we talk about them, are full of charm. The readers of every age group. And The Adventure of Toto contains a very amusing description of mischievous acts of a baby monkey and then that named Toto. So let's move further towards the summary of this story. अब we will discuss about on the basis of the value points of this story, like we will make some point and then after we will discuss on that. So first point here is that grandfather bought a monkey, means we can say grandfather bought a baby monkey. The author's grandfather bought a baby monkey for 5 rupees from a Tonga driver. Grandfather named it Toto. The author's grandmother didn't like the presence of a bird or an animal, and this was the reason that grandfather kept the secret of Toto from his wife. Grandfather and the author put Toto in a closet. Toto was fastened to a peg in the wall, but Toto broke open the chain and also tore to pieces the author's school blazer. It proved to be a mischievous monkey. Next point is that Toto transformed to the servants' quarter. Keeping in view the mischievous nature of Toto, he was transferred to the servants' quarter where other pets were kept. But here also Toto created nuisance. He didn't let other pets sleep. Grandfather took Toto along with him to Saharanpur where he went to take his pension. Toto was put in a big black canvas kit bag. They were going by train, and when the ticket examiner came, Toto thrust out his nose. He grinned at the ticket examiner. The ticket examiner charged 3 rupees for taking Toto in the train. Next point, Toto put in a stable. The writer's grandmother finally accepted Toto. He was placed in a stable with the family donkey named Nana. Nana and Toto became friends. Toto enjoyed taking a bath in warm water. One day, he wanted to test the warmth of water and entered the large kitchen kettle. Water started boiling. Toto started jumping up and down. It was the grandmother who hauled him out. Next point, Toto's mischiefs. Toto was very fond of making mischiefs, and he tore things, broke plates and utensils in the dinner room. And instead of this, he tore the dresses of the author's aunt. But one day, Toto found a plate of pulao. He started eating pulao when the grandmother cried. Toto threw a plate at her. He threw a glass of water in the face of the author's aunt. He took the dish of pulao and went out through a window. All afternoon, he was faced the author's aunt. All afternoon, he was sitting on the branches of a tree. After eating the rice, he threw the dish down, which broke into pieces. Now he was very happy. Toto finally sold. Toto caused many problems. The family had to face much loss due to the mischiefs of Toto. The author's family could not bear these losses and nuisance.
Ultimately, Toto was sold to the same tonga driver. The members of the family heaved a sigh of relief. So now, student, this was the summary in English for you, and now we will talk all this in Hindi. So student, चलिए इसको शुरू करते हैं. अब पहला पॉइंट हमने बात की थी कि ग्रैंडफादर बॉट अ बेबी मंकी, मीन्स कि जब दादाजी एक बेबी मंकी को लेकर के आए. लेखक के दादा, जो हमारे राइटर के दादा हैं, वो एक तांगा चालक से, टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में एक बंदर का बच्चा लाते हैं और दादा ने उसे टोटो का नाम दिया है. जो हमारे राइटर की दादी हैं, वो किसी पंछी या किसी जानवर को रखना पसंद नहीं करती, और यही कारण था कि दादा ने अपनी पत्नी से टोटो को छुपाए रखा. दादा और जो राइटर हैं, टोटो को एक छोटे स्टोर में रखते थे. टोटो को दीवार की एक खूंटी से वो लोग बांधते थे, परंतु टोटो ने उस चेन को तोड़ दिया जिससे वो बंधा हुआ था, और लेखक के स्कूल का जो कोट था, ब्लेज़र था, उसको भी फाड़ दिया. वह एक शरारती बंदर था और ये उसने सिद्ध कर दिया था. उसके बाद टोटो को जो सर्वेंट थे उनके क्वार्टर में रखा गया. टोटो के इसी मिस्चीवियस बिहेवियर को देखते हुए उसे सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया गया, जहाँ पर दूसरे जानवर भी थे. लेकिन यहाँ भी टोटो जो था वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा, दूसरे एनिमल्स को परेशान करता था, दूसरे एनिमल्स को वो सोने नहीं देता था. और उसके बाद में क्या हुआ कि जो दादा थे वो टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले गए, जहाँ पे उनको अपनी पेंशन लेने के लिए जाना होता था. टोटो को एक बड़े से उन्होंने कैनवस का जो बैग होता है उसमें रख लिया था, जिससे कि वो दिखाई ना दे. और उस वक्त वो रेलगाड़ी से जा रहे थे, लेकिन जब टिकट चेकर आया तो टोटो ने उसकी नाक पर प्रहार कर दिया, यानी उसको हिट कर दिया टीसी को. तो टिकट चेकर को दांत भी दिखाए टोटो ने, मंकी ने. अब टिकट चेकर ने टोटो को रेलगाड़ी में ले जाने के लिए 3 रुपये लिए इसी बात पर. जब इन सब चीज़ों से वो लोग तंग आ गए तो टोटो को उन्होंने जो स्टेबल होता है तबेले में वहाँ पर रखा. लेखक की दादी ने अंत में वैसे टोटो को स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी टोटो को रखने के लिए उनके परिवार में एक गधा था जिसका नाम था नाना, उसके साथ रखा. नाना और टोटो दोनों दोस्त बन गए थे. टोटो को गुनगुने पानी में नहाने में मज़ा आता था. एक दिन जब वह पानी की गर्माहट की जांच करना चाहता था तो वह रसोई की बड़ी केतली में घुस गया. पानी उबलना शुरू हो गया. टोटो ऊपर नीचे कूदने लगा. फिर बाद में दादी ने ही उसे बाहर निकाला, वरना वो जल सकता था. और हम अगर टोटो की, उस बेबी मंकी की शरारतें की बातें करते हैं तो टोटो को शरारतें करना बहुत अच्छा लगता था. वह सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता था, फाड़ देता था. खाने की जो कमरे में प्लेटें थी, बर्तन थी, उन्हें तोड़ देता था. उसने लेखक की जो आंटी हैं, जो राइटर की आंटी थी, उनकी पोशाक जो थी, कपड़े, उसको भी फाड़ दिया था. एक दिन टोटो को पुलाव की एक प्लेट मिली और वह पुलाव खाने लगा. जब दादी ने उसको चिल्लाई उसके ऊपर तो टोटो ने उस प्लेट को ही फेंक दिया. उसने लेखक की आंटी के चेहरे पर पानी का गिलास भरा हुआ वो भी फेंक दिया और पुलाव की प्लेट उठाकर खिड़की से बाहर कूद कर आ गया और एक पेड़ पर बैठ गया. सारा दिन वो यहीं बैठा रहा. चावल खाने के बाद वह प्लेट उसने नीचे फेंक दी, जो गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई, और यह देखकर टोटो बहुत ही खुश हुआ. खैर, इन सारी चीज़ों से जब वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए तो उन्होंने अंत में डिसीज़न लिया कि हम टोटो को बेच देते हैं. टोटो ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी. टोटो, बच्चों, जो बेबी मंकी है उसका नाम है. टोटो की इन्हीं शरारतों की वजह से जो परिवार था उसको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा था. लेखक का परिवार इतना नुकसान और उसकी जो मिस्चीवियस हरकतें थी उनको सहन नहीं कर सकता था, तो अंत में उन्होंने टोटो को उसी तांगा चालक को बेच दिया और परिवार के सभी फैमिली मेम्बर्स ने एक राहत की सांस ली. So student, this was the summary of your chapter number 2 from Movements, and we will discuss line by line this chapter in the next video. So you read this chapter before we continue line by line explanation in our next. And if you have any query, comment, suggestion, so you can message me students. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. Please like, share and subscribe. Thank you.